हेलो एवरीवन, आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। ओके, सो और फंडामेंटल इज द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। इसके बाद अगर हम देखा जाए, सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज इज dW बाय dQ। W इज द एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या आएगा? जूल्स पर कूलम। इसको हम कहेंगे वोल्ट्स। जूल्स पर कूलम इज वोल्ट्स। So what is the energy? Is the integration of voltage with respect to charges. So this is important. Okay. So then how do you define power? Power is equal to dW by dt. Energy per unit time. इसका यूनिट्स क्या आएगा? जूल पर सेकंड and it is watts. Then what is the work? What is the energy? Energy for the time duration of energy for a time duration of T1 to T2 will be integration of from T1 to T2 P of T dt. P of T is the instantaneous power. Okay, so P of T को कैसे लिख सकते हैं हम? P of T will be dW by dt और इसको हमने dW by dQ into dQ by dt इस फॉर्म में लिखा. So this is your voltage and dQ by dt is your current. So P of T कैसे आएगा? V into I. And if we take the instantaneous value, V of T into I of T, ये हो गया power and the units is watts. Okay, so this is the concept about the energy and voltage. Then we will move towards the current. So this is the your basic Ohm's law. So how we define current? dQ by dt. Q is coulombs per second, which is ampere. Okay, so Q is equal to integration of current with respect to time. So in this way we can calculate the charges. And all this concept I have taken from the book which is called as the Alexander's head book. This is one of the best book that will make your concept very clear. Okay, I will recommend आप यही book use कीजिए. So इस book में इस तरह से कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम दी है. सो इसमें से हम we will take the example of 1.8. इसमें देखिए क्या दिया है. The current flowing past a point in a device shown in the figure. Okay, in milliampere. Calculate total charge to the point. So हमने जो अभी सीखा उससे हम ये कैलकुलेट करेंगे. So first of all, this is your question. So इसमें क्या है? दो टाइप के फिगर है. First is ये है increasing ramp from 0 to 1 milliseconds and this is your step signal from 1 to 2 milliseconds. रैम क्या है, स्टेप क्या है, हमने देखा है. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस. वो किस तरह से निकालेंगे हम? सबसे पहले वी हैव टू आई ऑफ टी निकालेंगे हम फ्रॉम 0 to 1 सेकंड एंड 1 to 2 सेकंड. इंक्रीजिंग रैम्प सिग्नल है तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्लोप. सो दिस विल बी योर y1, this will be y2, this is x1, this is x2. स्लोप कैसे निकलेगा? y2 minus y1 upon x2 माइनस एक्स. तो ये स्लोप हो जाएगा 10. सो आई ऑफ टी का इक्वेशन कैसे आएगा? 10t फ्रॉम 0 to 1 मिलीसेकंड. सो ये इक्वेशन कैसे आएगा यहाँ? 10t फ्रॉम 0 to 1 मिलीसेकंड. इसके बाद दिस इज योर स्टेप सिग्नल. स्टेप सिग्नल मींस सिंपल 10 मिली एम्पियर फ्रॉम 1 to 2 मिलीसेकंड्स. ओके, सो ये हमने सिग्नल लिख लिया इस इक्वेशन के फॉर्म में. दिस इज वेरी इजी. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्जेस व्हिच इज द इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो दिस इज आल्सो वेरी इजी. कैसे निकालेंगे हम? From 0 to 1 milliseconds, what is the equation? 10t dt plus 1 to 2 के बीच में क्या है? 10 dt. तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 10 बाहर निकाले तो ये हो जाएगा t. अगर हम लिमिट पुट करें तो ये 0 to 1, ये 1 to 2, ये हो जाएगा 10 by 2 into 1 minus 0 और ये हो जाएगा 10 2 minus 1, ये हो जाएगा 5 plus 10, ये हो जाएगा 15 कूलम्स टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एट दिस वेवफॉर्म. एंड वन मोर कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट है, इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस और करंट दिया है आपको. इंटीग्रेशन का ही दूसरा मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व. क्यू कैसे निकल सकते हैं हम? एरिया. और इस कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे हम? दिस इज वन ट्राइंगल और दिस इज वन रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द क्यू? एरिया. एरिया कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. सो ये है 1 मिलीसेकंड, ये है 1 मिलीसेकंड और ये है इसकी हाइट ऑफ 10 मिली एम्पियर. ओके, सो टोटल कितना बन जाएगा? 5 plus 10 15 कूलम्स. सो टोटल नंबर चार्जेस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. इंटीग्रेशन का ही मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व. कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल और रेक्टेंगल, देन यू कैन फाइंड एरिया वेरी इजीली. But if it is form of the parabolic signal or exponential signal, then you have to use the integration. That is not that difficult.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका करंट इस फॉर्म में है 10 रेज़ टू पावर -2t, सो इसका हम वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द चार्जेस। तो इसके चार्जेस कैसे निकालेंगे हम? q इज इक्वल टू 0 to 1 10 रेज़ टू पावर -2t dt। ओके, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके हम वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ द चार्जेस। कभी आपको डायरेक्टली एरिया यूज करना पड़ेगा, एंड इफ यू कैनॉट फाइंड इट डायरेक्टली देन वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। देन इसके बाद हम मूव करेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ पावर देखने के लिए वी विल रेफर डायरेक्टली द फॉर्मूला गिवन इन द एलिमेंटल साइडुकू बुक। अब इसमें क्या दिया इन्होंने, देखिए, पैसिव साइन कन्वेंशन is satisfied when the current enters through the positive terminal, and if the current enters through the negative terminal then it is the negative power and this is the positive power। okay, so ये कन्वेंशन ही हम पूरे सिलेबस में यूज करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी इजी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये है कोई एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, दिस इज नॉट अ सोर्स, दिस इज द लोड। इफ द करंट इज एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, सो पावर इज गेटिंग एब्सॉर्ब बाय द लोड। करंट अगर लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो पावर इज गेटिंग डिलीवर्ड। इतना सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल अगर कोई पैसिव एलिमेंट है आपके पास एंड दिस इज प्लस दिस इज माइनस, इफ द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल देन दिस एलिमेंट विल एब्सॉर्ब द पावर। इसके बाद इफ द करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल द पावर विल बी डिलीवर्ड। इतना इजी कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द करंट कैन फ्लो लाइक दिस ऑल्सो, अगर इस तरह से है मीन्स करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल, सो यहाँ जाके करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस तरह से, दिस ऑल्सो पावर डिलीवर। अगेन हियर करंट इज एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल, 4 वोल्ट है, 3 एम्पियर है, पावर एब्सॉर्ब विल बी 12 वैट्स। सिमिलरली करंट इज लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, ऐसे एंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी होगा सेम, पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू 12 वैट्स। एंड अगेन पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू माइनस पावर सप्लाइड और पावर डिलीवर्ड, पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू माइनस पावर डिलीवर्ड। ये बुक में ये फॉर्मूला दिया है एंड दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, हमेशा आपको यही यूज करना है, ठीक है। एंड दिस आर द पैसिव एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, करंट इज लिविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 3 into 4 12 वैट्स। ओके, पावर डिलीवर्ड मीन्स माइनस ऑफ पावर एब्सॉर्ब, पावर एब्सॉर्ब कितना करेगा, माइनस 12 वैट्स। सो यही कंसेप्ट यहाँ दिया है, दिस इज द पावर एब्सॉर्ब ऑफ -12 वैट्स। -12 वैट मीन्स अगर कोई पावर नेगेटिव आ रहा है मीन्स इट इज पावर डिलीवर्ड। इसके बाद सिमिलरली हियर करंट एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल मीन्स करंट विल बी लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल deliver the power of 12 watts. Power deliver of 12 watt means what is the power absorbed, -12 watts. यही सिंपल कंसेप्ट है। Okay, so this is all about the power absorbed or power delivered by the loads. Load can be resistive, inductive or capacitive. So next concept देखेंगे हम, power absorbed by the voltage source. For example, if you have this is plus minus 10 volts and 1 ampere is entering into the positive terminal, so this source will power absorb the power of 1 into 10 is equal to 10 watts. Simple. Then if the current is leaving the positive terminal 10 volts, then power will get delivered. How much? 1 into 10 is equal to 10 watts. Then if you see further, if it is like this, if current is leaving is minus 10 ampere and this is 10 watts, current is leaving the positive terminal means it will deliver the power. कितना power deliver करेगा? Minus 1 into 10 is equal to minus 10 watts. And power is minus means power delivered is negative means it is absorbing the power. So power absorbed is equal to minus power delivered. ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल if this is 10 volts and minus 1 ampere is entering into the positive terminal means it will absorb the power. करंट एंटर कर रहा है positive terminal means it will absorb the power. How much power? Minus 1 into 10 is equal to minus 10 watts. And minus power absorbed is equal to power delivered. So actually it is delivering the power. Okay, so ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने, द बुक फ्रॉम द एलेक्जेंडर साइडुकू, जिन्होंने ये दिया है, प्लस पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू माइनस पावर सप्लाई, ये हम बोलेंगे पावर डिलीवर्ड। वी आर टेकिंग द सेम कंसेप्ट दैट इज गिवन इन द एलेक्जेंडर साइडुकू बुक। ये हो गया सोर्सेज, द सेम विल अप्लाई फॉर द करंट सोर्स। करंट सोर्स आल्सो सप्लाइज एंड डिलीवर द पावर, ठीक है। सो what is the summation of power absorbed plus power delivered will be equal to 0. This is true for the single independent source. It can be voltage source as well as the current. Current source के लिए भी same concept apply होगा। Current अगर positive terminal से leave कर रहा है, it will deliver the power, और current positive terminal में enter कर रहा है, it will absorb the power.
For example, this is resistor. Resistor will always absorb power. Resistor cannot deliver the power. Resistor is a power absorbing element. ओके, सो करंट यहाँ से एंटर करेगा तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और हम हमेशा केवीएल अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक ऐसा रजिस्टर दिया है, ओके, एंड इफ करंट इज एंटरिंग लाइक दिस, करंट ऐसे एज्यूम करते तो आपको यहाँ पॉजिटिव लिखना ही पड़ेगा और यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा इफ यू आर फॉलोइंग दिस बुक कंसेप्ट, ओके, देन इट विल एब्सॉर्ब द पावर। और अगर आपके पास यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रजिस्टर में दिया है, सो ऑलवेज एंटर द करंट लाइक दिस। अगर आपने ऐसा लिख दिया, this is voltage, and if current is living like this, then it is problematic because resistor cannot deliver the power. Or if you follow the Alexander Sadiku book, then the convention should be current should always enter into the positive terminal for the power to be absorbed. Only true for the resistor load. Inductor and capacitor in transient condition can absorb as well as deliver the power, but only in case of resistor you have to follow this sign convention that in resistor current should always enter into the positive terminal. बाकी concept देखेंगे हम next lecture में. Thank you.